Hello children, how are you all of you? So, what we are going to learn today? We are going to learn the new topic, relationship between zeros and coefficient of a polynomial. So, we are already familiar with zeros of a linear polynomial. So, let us just revise it that. Suppose a linear polynomial we have written ax plus b. This is the linear polynomial ax plus b. So we have seen that 0 of it is, how to find the 0? We can put it equals to 0 and then easily we can find out ax equals to 0 minus b is minus b, x equals to minus b by a. So this is the simple 1 0. This is a 0. X equals to minus b by a is 0 of a linear polynomial. It is a 0 of linear polynomial that we have seen. And now what we are going to study is the relationship between zeros and coefficient of a. First we will see two types of polynomials will be there. First one we will see of quadratic and then we will see of cubic. So we will verify this relationship, cubic polynomial. So two we are going to study, relationship between zeros and coefficient of polynomial of quadratic polynomial and cubic polynomial. So let us start with quadratic polynomial. So let us start. See now. So let us take one quadratic polynomial. Let us take a quadratic polynomial. We will assume one quadratic polynomial and we'll do it stepwise. So I have taken one quadratic polynomial px. Px equals to, this example I have taken, 2x square minus 24x plus 70. This one example I have taken. Now we have to find out the zeros first of all. This is a quadratic polynomial, children. Why it is called quadratic? Because the highest power of the variable here is 2. That's why it is quadratic. Now we have to find the zeros, and you have learned in class 9th about that, how to split the middle term of a quadratic equation or a polynomial, that you have studied in class 9. So again we will do it this one also. So first of all, see, anything common is there. So common is there 2. So let us take 2 common. So if we take 2 common, then what left to us? 2 common, the x square, 2 12s are 24, 2 35s are 70. So we have taken common as 2. Now we are going to split this middle term. We have to find two numbers to split x square minus 12x plus 35 by middle term split method. So we need two numbers. That means we need two numbers such that on adding we'll get sum of two terms. We need two numbers here, two terms, such that let us assume that a and b. So on adding we want minus 12. On adding we need minus 12. And on multiplying we need to find out two terms or two numbers. Two terms or two numbers. Here why it is called terms? Because variable x is also there. So we need two terms such that on adding we need minus 12. On multiplying we need this into this, 1 into 35. That means 35. So we need two numbers such that on adding we need minus 12 and on multiplying we need 35. So what are the two numbers? What are the two numbers? You have to always take the factors of 35 and you can find out easily. So what are the factors of 35, children? So let us take the factors of 35 here. 5 7s are 35. 7 ones are 7. So what are factors? 5, 7 and 1. So try to make 12 and 35 already every time you will get. But main thing is you have to make minus 12. So I got the numbers. Therefore terms are minus 5 and minus 7.
Minus 5 minus 7 will get minus 12. Minus into minus plus 5 7s are 35. So our middle term split is over. Now what we'll do? We'll write like this: 2 x square minus 12 you can write as minus 5x minus 7x plus 35 you can write as 5 into 7. So children, what we have done here in this question, this is our question. This we have to split the middle term and we have splitted the middle term. See children, on adding minus 12 is there, minus 12, so minus 12, minus 5, minus 7, minus 12. On multiplying we need 35, so 5 into 7, 35. Minus 5 into minus 7, minus 35, plus 35. Now take this two terms and these two terms together. 2 is running out only. What is common here? X. We take common, then what left? X minus 5. What is common here? Minus 7. So what left? X minus 5 again. Minus into minus plus 7 into 5 and minus 7 into x minus 7x. So we have splitted the middle term. So what is common now, children? X minus 5 is common. So what left inside? X minus 7. And this 2 is outside only. It will not affect us, the question. So now we have splitted the middle term and we have transformed it into irreducible factors. These are the factors of this quadratic polynomial. We got the factors. This is first factor, this is second factor. So we got the factors and this is the third one, factor 2 is the common. Now we have to verify the result, relationship we have to find out. So let's find the factors of this one. We can find out the factors. So put it equals to 0. X minus 5 2x minus 5 x minus 7 equals to 0. Put it equals to 0 so that we'll get the factors. It implies the product of two numbers are 0. That means 2 is never equals to 0. So product of these two numbers equals to 0. That means either x minus 5 equals to 0 or x minus 7 equals to 0. It implies what we'll get, children? X minus 5 will go there, x equals to 5 or x equals to 7. So we got the factors x equals to 5 and x equals to 7. These are the x equal to 5 and this x equals to 7. These are the zeros. These are the zeros of polynomial. So 5 and 7 are zeros of the polynomial, because when we put 5 or 7, then we'll get the polynomial value as 0. So these are the zeros of the quadratic polynomial. Now we have to verify the relationship. So see how to verify the relationship, children. So this is our quadratic polynomial and these zeros we got. Zeros are 5 and 7. Now sum of zeros. So let's verify the relationship. Sum of zeros. What are the sum of zeros? How many zeros are there? 5 and 7. 2 zeros are there. So on adding sum of zeros, 5 plus 7 equals to 12. And this 12 we can write it as, now all listen here, children. Our equation general form is ax square plus bx plus c. Okay. Now 5 plus 7 equals to 12. Now we can write this 12 as minus 24 by 2. See what we have written? 12 as minus plus 24 by 2 equals to 12. Now comparing it, this is what minus 24. See, where is minus 24 here? See, minus 24 is here. What is this minus 24? This minus 24 is coefficient of x. So we'll write as minus outside coefficient of x. And what is 2? 2, where compare this to? What is 2? 2 is coefficient of x square. Okay, so coefficient of x, what is coefficient of x? Minus 24. What is coefficient of x square? 2. So minus plus 24 by 2, 24 by 2 is 12. So see children, that means sum of zeros equals to, we are getting the same result 12, here also 12. That means we can write as sum of zeros, therefore sum of zeros. What is minus 24, children? Listen,
What is minus 24 here? See, what is minus 24 here? B. This is B. Minus 24 is B. Okay, so we'll write as sum of zeros minus outside running on B. Okay, now what is coefficient of x square? Coefficient of x square is A. So we can write as minus B upon A. This is, first thing is verified. We have verified sum of zeros equals to minus B by A. Sum of zeros equals to minus B by A. We have verified. Now product of zeros. What is product of zeros? Now listen carefully again. Product of zeros. What are product of zeros, children? Let us see. Product of zeros, 5 multiplied by 7. 5 sevens are how much? 35. 5 sevens are 35. Now divided by 2. How much? 2. So when we divide it by 2, the same time we have to multiply by 2. So we'll get 70 by 2. Now compare what is given to us. Where is 70? See the 70, children. Where is 70? 70 is here. What is this 70? Compare this with this one. C. C is 70. C is 70. So we'll write here 70 as C. Now 2. And we know what is 2. What is 2 here? 2 is A here. 2 is A here. So we'll write 2 as A. So product of zeros, we got the relationship. Product of zeros equals to C by A. Therefore product of zeros, C by A. Now if you put the value 70, C is 70 and A is 2, we again get 70 by 2 equals to 35. So C is 70 and A is 2, that means we'll get 35. So in this way we have verified that sum of zeros, therefore last step we'll write. So that we are discovering now, children, all these things. Therefore we can write as, therefore sum of zeros, sum of last step, therefore sum of zeros of any quadratic polynomial, of any quadratic polynomial equals to minus B by A, and product of zeros equals to C by A. Okay, children, clear? What is B and A? You know what is quadratic polynomial? Ax square plus bx plus c. This is our quadratic polynomial. So whenever we need to find sum of zeros, simply take minus b upon a. We'll get the sum of zeros. And what are product of zeros? C upon a. So this completes the zeros and relationship between zeros and coefficient of a polynomial of a quadratic polynomial. Okay, children, understood, children? Now let us take example to illustrate more. One example we'll take. I am taking one quadratic polynomial, 2x square minus 7x minus 4. This is a quadratic polynomial. We have taken one. Now let us find zeros of this polynomial using middle term split. So let's split the middle term. Now we need two numbers p and q such that on adding we need minus 7 and on multiplying we need 2 into minus 4. How much? Minus 8. Now children, how we are finding this? So write the rule. Every time you have to apply this. This is our polynomial. Now what is sum of zeros? Sum of zeros equals to minus b upon a and product of zeros c upon a. Now how to find two numbers? How to find two numbers? We need two numbers p and q such that on adding we need b and on multiplying we need
A into C. So you follow this rule. If you follow this rule, you will not face any problem. Sum of zeros, you learn by heart this one, minus B by A, and product of zeros, C by A. And we need two numbers such that on adding we will get B, that means this one, B middle term, and on multiplying we need A into C. Always this one you have to follow. Now similarly we are following here also. On adding we need minus 7. On multiplying we need A into C, means 2 into minus 4 minus 8. So can you guess two numbers? Always numbers come from the multiplication side, not from the plus one side. Two numbers that you have to split ना children, always हमेशा कहाँ से आते हैं? मल्टीप्लिकेशन वाले से आते हैं. तो हम मल्टीप्लिकेशन वाले से इसके क्या निकाल लेते हैं? इसके फैक्टर्स निकालते हैं. चलिए 8 के फैक्टर्स लीजिए. व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 8? हम 8 के फैक्टर्स लें. ये हमारा नंबर है, ये हमारा क्वेश्चन है, वापस लिख रहा हूं मैं. अभी देखिए हमको दो नंबर्स पता चल गए हैं. प्लस करने पे हमें कितना चाहिए? -7. और मल्टीप्लाई करने पे चाहिए कितना हमें? 2 इंटू -4 -8. अब हमें हमेशा क्या करना है? जो मल्टीप्लाई वाला है उसके फैक्टर्स ले लीजिए आप रफ में. तो फैक्टर्स क्या क्या आ गए बच्चों? देखो 2 2 2 1. अब इन चार नंबर्स, आपको दो नंबर्स इस तरह से बनाने हैं कि ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाए. प्लस करने में -7, मल्टीप्लाई करने में -8. क्या बना सकते हैं दो नंबर? अभी निकल के देखो. 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 में से 1 गए 7. अगर -7 चाहिए तो -8 + 1 लिख देंगे. तो हो गए मिडिल टर्म स्प्लिट. दो नंबर्स क्या आ गए? -8 + 1. -8 + 1 -7. और मल्टीप्लाई करने में कितना चाहिए? -8 इंटू 1. देखो -8 इंटू 1 कितना हुआ? -8. वो आ भी रहा है हमारा. ठीक है, तो हमारी क्या हो गई? मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई. अब ये दो के पेयर अब बना लीजिए. अब इसमें क्या कॉमन है? 2 कॉमन है. यहाँ क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है. 1 होगा. जब कुछ ही कॉमन नहीं होता तो क्या कॉमन आता है? 1 आता है. अच्छा, ये क्या लिखा अपन ने? क्या लिख दिया हमने? 8 क्यों लिख दिया? -4 है तो -4 लिखना है हमें. -4 इंटू 1. तो आप देखिए -4 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का तो -8 आ रहा है हमारा. और प्लस करने पे -7 भी आ रहा है. तो यहाँ क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं. तो कितना कॉमन है? 1. कितना बचा? x -4. ठीक है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही. देखिए प्लस करने पे -7, -8 + 1 -7. मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए हमारे को? -8 चाहिए. तो आ रहा है देखो 2 इंटू -4 करिए, कितना आया? -8 आ रहा है. हाँ, -4 यहाँ था, हमने क्या कर दिया था? गलती से 8 लिख दिया था. ठीक है, अब x -4 क्या करना है हमको? कॉमन ले लेना है. अगर हम x -4 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा बच्चों? 2x + 1 बचेगा. ठीक है, तो हमारे जीरोस निकल के आने वाले हैं बच्चों. देखो देयरफॉर लास्ट स्टेप, देयरफॉर जीरोस क्या क्या आ गए हमारे? जब भी जीरोस निकालना है तो उसको 0 के इक्वल में रख दीजिए तो आपको निकल जाएंगे. x -4 = 0, इट इम्प्लाइज x = 4. एंड 2x + 1 = 0, इट इम्प्लाइज 2x = -1, x = -1/2. तो 2 जीरोस आ गए, 4 और -1/2. ये 2 जीरोस आ गए हमारे पास, 4 और -1/2. अब चेक कर लेते हैं सम ऑफ जीरोस. अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं. सम ऑफ जीरोस क्या होंगे? सम करो जीरोस का. 4 + -1/2. एलसीएम लो, कितना आया? 4 टू द 8 -1/2. कितना हुआ? 7/2. अब सम ऑफ जीरोस आया 7/2. अब आपको फॉर्मूला क्या है सम ऑफ जीरोस का? -b/a. b कितना है? b कितना है? देखो आप चेक करो. b कितना है? -7. रख देते हैं वैल्यू -7. माइनस बाहर चलते ही -b/a. और a कितना है? a चेक करो. a कितना है हमारे पास? 2 है. व्हाट इज a हियर? 2. तो हम 2 रख देते हैं. तो देखिए माइनस इंटू माइनस कितना हुआ? 7/2. देखो वेरीफाई हो गया. अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखिए. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आता है बच्चों? क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? क्या क्या जीरोस है हमारे? 4 इंटू -1/2. 2 टू द 4. कितना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? -2. अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं. क्या है हमारे पास फॉर्मूला? c/a. c कितना है हमारा? देखो c कितना है हमारा? -4. c कितना है? -4.
c by a -4। a कितना है चेक करो, a कितना है हमारे पास, देखिए a कितना है हमारे पास 2, तो रख दीजिए a की वैल्यू, कितना आएगा -2 आएगा। देखिए दोनों सेम आ रहे हैं, सम ऑफ जीरोस भी सेम आ रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी सेम आ रहे हैं। तो ये -7/2 कितना होता है, -b/a लिख दो यहाँ पे ताकि आपको याद रहेगा, ये -b/a होता है। सो दिस कंप्लीट्स द टॉपिक ऑफ सम ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने क्या देखा भैया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल भी होता है, उसको भी देख लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल के सारे टर्म्स इस तरह से हम कर सकते हैं। So in short, we can write, children, for a quadratic polynomial ax square plus bx plus c. Finally, we can write this is our quadratic polynomial. Sum of zeros. Sum of zeros को हमने अल्फा बीटा भी दे सकते हैं, अल्फा एंड बीटा। Sum of zeros अल्फा प्लस बीटा माइनस b by a. Product of zeros अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। तो हमने अल्फा बीटा नाम दे दिया। अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी पढ़ लेते हैं। ये तो हमारा हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमने अच्छे से देख लिया। अब हम करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ चलते हैं। इन जनरल फॉर ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। इन जनरल फॉर ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया हमने, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लिया। और इसके क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो कितने एटमोस्ट जीरोस होंगे, इसके 3 जीरोस होंगे। कितने जीरोस होंगे चिल्ड्रन, 3 जीरोस आर। अब यहाँ 3 जीरोस हैं तो अल्फा बीटा और गामा, ये क्या कहलाता है, गामा। ये साइन है गामा, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये क्या है, गामा है। तो क्वाड्रेटिक के 2 जीरोस होते हैं अल्फा बीटा, और क्यूबिक के कितने होते हैं, 3 होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। अब इसके भी जो रिलेशनशिप है वो इस तरह से है, आप करके भी देख सकते हैं, हम एग्जाम्पल करके देखेंगे। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सम ऑफ जीरोस क्या होता है इसका, इसमें 3 सम, जीरोस कितने 3 है, तो इसके रिलेशनशिप होता है -b by a। ये सम ऑफ जीरोस है इसका, पहला है सम ऑफ जीरोस, ये कहलाता है सम ऑफ जीरोस। फिर जो नेक्स्ट आता है वो आता है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसका जो होता है वो होता है c by a। इसको बोलते हैं सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसमें सम भी है और प्रोडक्ट भी है जीरोस का। फिर जो लास्ट आता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो होता है -d by a। डी क्या है, आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा ही है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। डी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और ए अपन देखा ही कोएफिशिएंट है x क्यूब का। तो 3 टर्म्स, 3 चीज आ गई, अल्फा सम ऑफ जीरोस, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये हुआ क्यूबिक पॉलिनोमियल। So this comes to an end of this topic. Today's topic is completed. So we have learned what we have learned today: relationship between zeros and its coefficient of a quadratic polynomial and a cubic polynomial. So I hope you understood today's topic. Thank you so much for watching the video. Goodbye. See you again.